Welcome once again. Today, I, Dr. Tarul Zadav, I'm going to speak on this very commonly asked question. Common, especially जब सेकेंड ईयर में बच्चे आ जाते हैं तब ये सवाल पूछा जाता है, मैम हम सर्जरी पढ़ क्यों रहे हैं, हमें जब होम्योपैथी ही करनी है। मतलब हम तो अगर सर्जरी पढ़ भी रहे हैं तो हमें तो सर्जरी करनी अलाउड है नहीं ना, तो हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है एट दिस लेवल दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, आप सर्जरी क्यों पढ़ रहे हैं। बिकॉज जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है ना, आपका सर्जरी के प्रति वो कंफ्यूजन बरकरार रहेगा एज एन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर स्टडिंग सर्जरी, बिकॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग सर्जरी is going to create further confusions, is going to make you hate that subject, not like that subject, and ultimately you will not understand इसकी यूटिलिटी क्या है और आप कितने चीजें मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, सो नाउ देखो, कई सारे कंडीशंस आपको पता होंगे, आपने देखी भी होगी आज आपके आजू बाजू, जो शायद पेशेंट बीमार होने के बाद यू एंड अप गोइंग टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर ट्रीट कर देता है। कई बार होता है यार मेरे से नहीं होने वाला है आपके पेशेंट को, आप ये फलाना फलाना डॉक्टर के पास चले जाओ, वो शायद आपको सर्जरी कराएगा। ये क्यों सुनाई देता है, ये क्यों होता है कि हर बार मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी के पास चला जाता है। बिकॉज ऑब्वियसली अपने बॉडी में ना एक देयर इज अ वे इन विच योर बॉडी इज गोइंग टू डील विथ एनी काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इज अराइजिंग। अब ये इन्फेक्टिव बोलो, ये कोई नॉन इन्फेक्टिव बोलो, एनीथिंग। ओके, सो नाउ बेसिकली अगर आप ले भी लेते हो इन्फेक्टिव, एज सिंपल एज सम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, सो कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है आपके बॉडी में, दर्द होता है, वो स्वेलिंग आ जाती है, आप क्या करते हो, आप मेडिसिन लोगे। अगर वो मेडिसिन से ठीक नहीं होता है तो आप फिर भी वेट करोगे, शायद दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, वो स्वेलिंग बढ़ गई, उसका मतलब पस फॉर्मेशन हो गया है, राइट। सो नाउ व्हेन द पस हैज फॉर्म, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू स्टिल गो टू a regular doctor, and now he'll say now these antibiotics or whatever medicines they are not working, so now you have to go to a surgeon। मतलब आपको सर्जन के पास जाना है। क्यों? बिकॉज ये जो भी अंदर एक्यूमुलेट हो गया है टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट, वो उसे रिमूव करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर उसे रिमूव नहीं किया तो शायद ये और गहरा इन्फेक्शन बन जाएगा, ये इन्फेक्शन शायद स्प्रेड भी हो जाएगा एंड आपके लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन आ सकती है। बराबर है। सो बेसिकली फंडा क्या है यहाँ पे, वो टॉक्सिक प्रोडक्ट रिमूव करने का। बराबर है, ये सिंपल सी चीज है। इससे आपको सर्जरी की डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए। सो नाउ व्हाट बेसिकली सर्जरी, इट इज नीदर एलोपैथिक नॉर होम्योपैथिक। Understand this very clearly, right? Allopathy and homeopathy, these are medicinal line of treatment. Surgery is neither allopathic nor homeopathic. However, it is a medical specialty that uses operative manual, right? Operative manual मतलब they have their own rules, regulations, कैसे करना है, क्या करना है। एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स मतलब अभी जैसे आपके किचन में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, कारपेंटर के पास कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, टेक्नीशियन के पास या इलेक्ट्रिशियन के पास कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, वैसे ये सर्जन के पास कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, उनके हथियार। दे यूज दीज इंस्ट्रूमेंट्स ऑन अ पेशेंट, एंड नाउ फॉर व्हाट दे आर गोइंग टू यूज इट, दे आर गोइंग टू यूज इट आइदर टू इन्वेस्टिगेट और टू ट्रीट। इन्वेस्टिगेट एज इन जैसे आप शायद ब्रोंकोस्कोपी करा लो, शायद एंडोस्कोपी करा लो, शायद लैप्रोस्कोपी करा लो, शायद सिग्मोइडोस्कोपी करा लो, शायद एफएनएसी करा लो, शायद बायोप्सी करा लो। दीज आर इन्वेस्टिगेशंस। एंड और टू ट्रीट मतलब वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, बाय सच एज लाइक डिजीजेस और इंजुरीज, टू हेल्प इम्प्रूव द बॉडी फंक्शन। मतलब अभी जो पैथोलॉजी हो गई, वहां पे पस फॉर्म हो गया है, उस वजह से हो क्या रहा है, वो हाथ उठा नहीं पा रहा है, वो हिला नहीं पा रहा है, या कुछ फ्रैक्चर हो गया, हड्डी टूट गई है, वो हाथ हिला नहीं पा रहा है। सो बेसिकली हमें वहां पे बॉडी फंक्शन इम्प्रूव करना है, तो उस चीज के लिए ये सर्जरी की टेक्निक्स दे आर बीइंग यूज्ड, or they could be used to improve the appearance of the person or the patient, and or for some religious reasons, right? So now basically this is surgery. Now tell me, ये सब चीजें क्या होम्योपैथी के माध्यम से हो सकती है? Can you investigate? No, you cannot. However, you can treat. Can you improve the physical appearance if there is some deformity? यहाँ पे मतलब कोई हड्डी वड्डी टूट गई as a homeopath? No, you cannot. Right? So basically technique ही अलग है। However, एज अ होम्योपैथ आपके पास बहुत बड़ा स्कोप, बहुत बड़ा क्या स्कोप है, मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि एक किसी फिजिशियन के पास पेशेंट चला गया, उसको एब्सेस हो गया है,
उस चीज को लेकर, and he or she is unable to treat that abscess and then refers to a surgeon. However, as a homeopath, you have scope of treating लगभग ऐसे 70% cases जो शायद might be referred to a surgeon. You can use, you can with your homeopathic medicine manage it in place of surgery, before surgery, and after surgery. You have wonderful scope of managing with homeopathy. So that is the reason why even as a homeopath, मतलब उनकी टेक्निक ही अलग है, उनकी फील्ड ही अलग है, उनका डोमेन ही अलग है. इसीलिए एज अ होम्योपैथ जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लो, सर्जरी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आती, बराबर है, बिकॉज वी आर एबल टू मैनेज इवन विदाउट सर्जरी सर्टन केसेस. एंड जो उनका डोमेन है वो उनके डोमेन के पास रहे तो ज्यादा बेटर है ना, उनकी स्पेशलिटी है. सो व्हाट इज आवर स्पेशलिटी, लेट अस मैनेज इट, राइट. अब ये मैं नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर हैनेमन हैज स्पोकन अबाउट दिस, वेयर आई वांट यू टू गो बैक एंड रेफर योर ऑर्गन ऑफ मेडिसिन बुक. There he has clearly mentioned why, when, and where we need surgical interventions to be done. Right? So now he has mentioned, yes, he has spoken about surgery very clearly, the need of surgery also. So it is not coming from my mouth कि हम surgery क्यों कर रहे हैं. Neither it is your university which has decided कि surgery का book आपको पढ़ना ही चाहिए as a homeopath. No, it is because Dr. Hahnemann has given due importance in classification of clinical classification of diseases, right? He has classified diseases into 3 types. What are they? They are your indisposition, your surgical diseases, and your pure miasmatic diseases, right? Diseases proper that he has classified. So now based on this आपको जाके ढूंढना है अभी सर्जिकल डिजीज में एग्जैक्टली क्या क्या आते हैं. हाउएवर मैं बताऊंगी उसमें क्या क्या कहाँ पे उसका जिक्र किया गया है. यू हैव टू गो अहेड एंड रीड अबाउट देम इन डिटेल एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. प्रॉमिस मी दैट. ओके, वाई, बिकॉज इससे ना आपका सर्जरी का जो फंडा है ना वो थोड़ा क्लियर होगा, और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्लियर होगा. बिकॉज आपका एक तो fundamentally you will be able to read organ of medicine, and secondly you'll be able to understand that हम लोग हवे में नहीं सर्जरी पढ़ रहे, उसका कोई मकसद है. So now कहाँ पे आपको इसका जिक्र मिलेगा. You'll get an introduction in you'll get the क्या कहते हैं हम सर्जरी के बारे में जिक्र. Why is surgery needed? Why is surgery not needed? In the introduction itself. Mind you, Dr. Hahnemann was initially practicing allopathy, and then he himself discovered homeopathy, right? He was never against surgery, trust me, because he understood the due importance of surgery. He knew the place of surgery. He knew कि सब कुछ diseases रहते हैं ना, उनकी जगह surgery, मतलब उनके लिए surgery ही resort है. We need it even for homeopathic treatment. अगर आपको homeopathic treatment का utmost बहुत अच्छा result चाहिए, तो you should be able to identify certain cases जहाँ पे there is a mechanical obstruction, there is pathological abnormality, there is congenital anomaly. So वहाँ पे where homeopathy can do little good, you need surgical intervention so that we can do more good, right? So go ahead, read the introduction where he has mentioned about mal positions जहाँ पे you need surgical intervention, where he has mentioned about foreign bodies, new formations वगैरह. You will get the hint of this surgical introduction in aphorism 3, in aphorism 7 footnote 3. Go ahead and read it, where he has also mentioned that as a physician you should be able to identify what is it that is causing sickness to the patient, or what is a mechanical obstruction which is over there, which you need to be able to identify and therefore remove it. Also he has mentioned about मतलब जैसे अगर बच्चे ने कॉइन निकल लिया है तो आप दवाई देके वो कॉइन नहीं निकाल सकते. You have to remove the coin. Or if a pea is stuck in the nose, you have to do certain techniques or instrumental techniques and remove the pea from the nose. So this is where you need to understand and get it out of your head कि we are not against surgical intervention at all. We need to understand कि surgery कहाँ पे जरूरी है, कहाँ पे नहीं जरूरी है. Also in aphorism 185 he has mentioned about the local diseases, and he goes ahead and specifies in aphorism 186 the same thing, the so-called local maladies, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे आपके fractures के बारे में he has spoken, the injuries and the blows which are happening externally from through external
injury or through external affection, how you need to first correct the mechanical error which is out over there, so as to let the individual restore himself to health proper, right? Now, based on this, what I have found is we need to be very clear cut as a homeopath. सर्जरी का इंडिकेशन क्या है, सर्जरी का इंडिकेशन क्या नहीं है, राइट? सो सर्जरी का इंडिकेशन क्या होना चाहिए? अगर आपको कोई डिजीज, आपको कोई क्लिनिकल कंडीशन भी ट्रीट करनी हो, तो वो क्लिनिकल कंडीशन का दायरा, मतलब आप ट्रीट कर भी सकते हो कि नहीं वो क्लिनिकल कंडीशन को, ये कौन तय करेगा? ऑब्वियसली ये योर नॉलेज ऑफ फाउंडेशन, the background of knowledge that you're having will decide whether you are able to treat this condition. So now यहाँ पे एक तो knowledge of homeopath भी रहता है दूसरा, but basically the scope of homeopathy भी रहता है. So scope of homeopathy को मैं at a broader perspective रख के ये सब बता रही हूँ. Individually as a homeopathy में मेरा scope भी बहुत, शायद मैं भी सीख ही रही हूँ, right? So we all will be eventually enlarging our scope at a later on, gradually. But then this is what, as a homeopath, you need to understand that actual defects, deformities of organs at birth or congenitally, you indicate, I mean, the surgery is indicated. It is also indicated when there is a pathological product of the disease is still remaining and it continues to cause life-threatening issues to the patient. You indicate surgery. Also, in certain diseases which may be cured in real sense, but there is a pathological end product which stays in the background, and जैसे बड़ा सा calculi है, रह गया है, it has not been removed, and it is likely to cause hydronephrosis. In those cases, also you need to have surgical intervention. Also, you need surgical interventions for the conditions which are arising from external causes like roadside accidents, which lead to hemorrhage, which lead to fractures, which lead to railway spine injury. I mean, spine injuries. Surgery is needed. Also, in certain cases like pot spine, जिसे हम TV spine भी कहते हैं, और lumbar retrolisthesis or any other such conditions जहाँ पे आपको brace, splint की जरूरत है, वहाँ पे ये surgical apparatus, surgical braces, surgical applications are needed. Okay, they will orthotic support some जिसे कहते हैं, they are needed, right? And in certain conditions you need surgical interventions for the purpose of diagnosis, जैसे lumbar puncture, bronchoscopy, sigmoidoscopy, FNEC वगैरह वगैरह. So in these cases you need surgery. Also, in cases agar a patient is on homeopathic management, he's taking homeopathic treatment, but suddenly some emergency arises. I don't want you to stay fixated over it कि like नहीं हमें homeopathy ही देना है. Things happen. We are not in a utopian world, right? And we are not having the brahmastra of treating everything. I mean, nothing against anyone, but emergencies can happen at any given point of time, and you should be open to let that patient take the call of undergoing surgery, right? Also, in cases जहाँ पे बहुत intractable lesions है, they refuse to clear up, जैसे in gangrene है, it's spreading fast, and you want to save the other limbs, you want to save the other, I mean, the limb at large, or you want to save the other toes. And in case if it fails to respond to your treatment for whatever condition, then you need to take a call for surgery. Maybe it could be even debridement for that matter, not always amputation. It could be just debridement, it could be dressing also, it could be biopsy also, it could be anything. Also, in case of conditions like third-degree prolapse, in those cases also you need surgical intervention. So basically, surgery is required as a measure to help and facilitate your homeopathic treatment, because our high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is termed, right? So I don't think you should have any doubts now why we are using, why we are treating the patient with homeopathy, but why we are learning surgery. I hope now this is very very clear with you that हम surgery पढ़ रहे हैं, इसका एक मकसद है, so that हम pathological conditions को वक्त पे diagnose कर पाए, हम pathological conditions को ना ही diagnose कर पाए, उसे retro उसको उसका prognosis भी बराबर से कर पाए. Diagnose तो कर ही लोगे आप, right? But prognosis भी करना उतना ही जरूरी है, so that you are able to understand ये patient को हम कितना वक्त लेके we can just wait and watch,
or we can manage with homeopathy, and when should you be on high alert and when to refer this patient for a surgical intervention. ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है. I hope with this video you are able to get a clear understanding about why as a homeopath आप surgery पढ़ रहे हो, right? And if you still have some doubts, I want you to put in your comments below what doubts you're still having about the indications of surgery, or you're having any doubts about the scope of homeopathy. I will want to hear from you. Okay. So yes, I just feel one thing very clearly, that next time से कभी भी आपके पास जब patient आता है कोई, तो it is very important that उसको देख के ना आप डायरेक्टली ट्रीटमेंट देने से पहले एक डिसाइड कर लो, या ये कंडीशन पैथोलॉजिकली इतनी एडवांस्ड है, क्या इसमें रियली होम्योपैथी का स्कोप है, या क्या इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड है. और अगर रिक्वायर्ड है सर्जरी, then and you're treating it and you have successfully treated it, it also means that you have been able to treat a pathologically advanced surgical case, and that will be a feather in your cap, isn't it? So keep a track of it. Keep a track and record also of what are the pathological conditions that you're treating. And to keep a track of that, I think आपको surgery पढ़ना बहुत जरूरी है. Surgery, I mean जनरल सर्जरी, सिस्टमिक सर्जरी, ईएनटी, ऑर्थो, ऑप्थाल, डेंटल, सब कुछ एक साथ बहुत ओवरवेलमिंग लगता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे आ जाएगा. सो वरी नॉट, स्टे ट्यून्ड विद मी, subscribe to this channel for further notifications on the videos which I'm going to be posting gradually, and click on the link below to join the app, where I will be also putting up some free notes for you in case if you're a student and you really need those notes that will help you with your surgery exams. Okay, stay tuned, willing to hear from you. I mean, eagerly waiting to hear from you. What are the takeaways that you have from this video now? Okay, thank you.